नाहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे तमाम पाकिस्तानी और मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ऑल foreigners to my YouTube channel. Thank you for watching and thank you for your support to subscribing me and to help me to reach 100 subscribers in just 3 videos. Thank you very much. Today the topic we have to discuss is element. In early lectures we said that the matter is divided into two types. One is substance and the other was mixtures. In early lecture we said that the element is purest form of the matter. But now we say that there is difference between substance and element. When we say at that level, we said that the substance was not as pure as the element is. Because substance may be a mixture, substance may be a compound, a compound may be a substance and the element is also a substance. What is element? Element is the purest form of the matter. It's made up of same type of atoms. I'm giving you here an example that when we are talking about gold, we use in Asia, many people use in jewelry, women love that. So it's element. When we use it in jewelry, it's not in pure form. It's mixed up of some other elements. And the gold's purest form is not used in jewelry. It's element when it is in pure form. When it is made up of same type of atom. When its composition is just same type of atoms and it's have same atomic number, that is element. I said that element is purest form. It is just a simple way. When you break down it into simpler, you cannot break down it in a further way or in a chemical procedure. You cannot break gold into more further. It may be divided into atoms, atoms more divided into electrons, proton, etc. But you cannot clear it. You cannot distinguish between its and its property or its furthermore little substances. When you divide into more simpler form, it's remain the gold. As you break the carbon, the form of carbon charcoals, simply used in bricks making and many industries, you can break it into simpler form, but you cannot chemically break down it. The things that cannot easily break down into further some things is known as element. Element is the simplest and the pure form of a matter. In the early days, there were just 9 elements known to the world. I think there were carbon, gold, silver, tin, mercury, and lead, copper, iron, and sulfur. I think these were. In early days, these 9 things were just these 9 elements were known to the world. At that time, the people would think, the scientists, the people used to discuss the science, know that the element is the simplest form of matter. But nowadays, it's not the simplest form. As we said that in 19th century, there were 63 elements known to the world. And nowadays, we have 180 elements. And I think now the world is discussing about its atoms, its electron, proton, the atom more further divided into simpler form. Now the modern definitions of the element is the simplest form of matter that cannot decompose into more simplest thing. That's elements. Here come the questions. How it occurs. Many elements occur in the world at different percentage. Many things are at the earth, their level is different. At ocean it's different level, it's atmospheric, it's different. As we said that when we talk about the earth, the more occurrence element is oxygen. It's 47%. 47% oxygen is occur at that 40% elements. It's all things found on earth. It's 47% is oxygen. And the second well-known element is silicon. Its occurrence is 28%. And we called about the occurrence of elements at ocean level. Yes, oxygen is superior there too. It's 86% oxygen
and 11% hydrogen. 3% are more elements. And when we talk about atmosphere, here oxygen comes the second. The first is nitrogen. It's 78%. Its level in the atmosphere is 78%. How element found? Previously we called about what is element and what was the we said that the number of element found in early days, it was 9, we discussed, and in 19th century there were 63. They were 180s or more than 180s. They may be found in future, but well, noun people know about 9 elements in early days means before the time, and in 19th century they know about 63 elements. Nowadays in 21st century they know about 180 elements. And we discuss the occurrence of element, how elements occur in the world, their percentage. We are talking about its percentage. There are different percentage. We divide nature's the earth surrounding into 3 types, 3 forms. First is earth. Here the oxygen is abundantly found, the 47%, and the second is silicon, 28%. And when we talk about oceans, here also the oxygen is at the top, it's 86%. Hydrogen is at 11%. 3% more things are found, more elements are found. And when we talk about atmospheric level, the hydrogen comes, nitrogen come here the first, it's 78%, and the second one is oxygen. Now we talk about how physically things are found. Physically means things we observe by our senses. First is more things, more elements. More elements are found in solid state. We are giving example here: sodium, zinc, gold, etc. Many more. Majority is solid. Now let me help you to understand. Second mostly found thing is its gaseous state. For example, oxygens, nitrogen, gaseous forms, chlorines, hydrogen, etc. These all are found in gaseous state. And the third and the most rare form is in liquid state. Just mercury and bromine found in liquid state. Just that for the foreigners, and now for my own language in Urdu. जी तो दोस्तों, तो एलिमेंट की बात कर रहे थे. तो हमारे पास एलिमेंट जो आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, वो है कि मैटर के अंदर 2 चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई थी. एक थी हमारे पास सब्सटेंस थी, और दूसरा हमारे पास मिक्सचर था. हमने सब्सटेंस को खालिस करार दिया था. खालिस करार दिया कि थोड़ा सा, यानी कि एक ही किस्म की चीज़ों में करार दिया था. जो मिक्सचर था हमने उसको मिक्सअप करार दिया था. बेसिकली जो हमारे पास सब्सटेंस थी, सब्सटेंस भी प्योर खालिस हालत में नहीं है. हम उसको मजीद छोटी चीज़ों में डिवाइड करते हैं. जैसे एलिमेंट्स में आ जाता है, एक एलिमेंट्स में आ जाता है, दूसरा फिर हमारे पास कंपाउंड में आ जाता है. एलिमेंट्स को हम इसलिए खालिस तरीन कह रहे हैं क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो सेम तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है. उनके एटॉमिक नंबर सेम ही होंगे. उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो क्वालिटीज होंगी, वो एक जैसी होंगी. जैसे मैंने इंग्लिश में बताया आपको कि गोल्ड की बात की है, तो अगर हम प्योर गोल्ड को लेंगे, बतौर एलिमेंट लेंगे, तो गोल्ड उसकी खालिस तरीन हालत है. उसके छोटे से छोटे ज़रात में भी अगर आप तोड़ेंगे तो आपको वो गोल्ड ही मिलेगा. टूटने के बाद वो नहीं यानी कि और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. तो एलिमेंट हमारे पास ऐसी चीज़ थी कि अगर आप उसको जिस तरीके से भी तोड़ें तो टूटने के बाद दोबारा वो किसी और चीज़ में ना आ जाए, वो हमारे पास एलिमेंट था. सेम मैंने इसके साथ एक और एग्जाम्पल ली थी कि इसकी कोयले की बात की थी. कोयले को वैसे तो आप डिवाइड करते जाते हैं, छोटे छोटे ज़रात में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन जो कोयला है आप उसको मजीद छोटा वो नहीं कर सकते, और चीज़ में कन्वर्ट नहीं करेंगे. वो टूटते टूटते और चीज़ नहीं बन पाएगा, रहेगा कोयला ही रहेगा. शुरुआती दिनों की बात करते हैं. तो शुरुआती दिनों में हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे जिनसे दुनिया वाकिफ थी. वैसे तो 180 एलिमेंट सारे के सारे नेचर में अबंडेंटली फाइंड थे, मौजूद थे. ये नहीं था कि वो मौजूद थे, लेकिन उनसे मौजूदा दौर के जो नॉलेज रखने वाले साइंसदान थे वो उनसे आगाह नहीं, उनको आगाही नहीं थी उससे.
तो हमारे पास शुरू शुरू में जो 9 एलिमेंट थे, कार्बन था, गोल्ड, सिल्वर, टीन है, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर एटसेट्रा। ये जो 19वीं सदी थी, 19वीं सदी में फिर जब आ गए हमारे पास कितने आ गए, 63 एलिमेंट यानी कि नॉलेज में आ गए, जिनसे लोगों को वाकफियत मिल चुकी थी। वो आज की बात करेंगे तो हमारे पास 180 एलिमेंट हैं, जिनके बारे में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, हर चीज़ में मौजूद है। तो उसकी नई तारीफ भी ऐसे ही करते हैं एलिमेंट्स की जदीद दौर के अंदर, कि एलिमेंट्स वो सादा तरीन चीज़ है, सादा तरीन हालत में, मैटर की वो सादा तरीन हालत है जिसको आम तरीके से या सादा केमियाई तरीके से मजीद नहीं तोड़ा जा सकता। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एलिमेंट्स आ जाएगी। तो एलिमेंट्स की वकू कैसे करते हैं, दुनिया में पाए कैसे जाते हैं, कैसे नहीं सॉरी कितनी हद तक पाए जाते हैं, इनकी खास परसेंटेज है, अर्थ पर इनके डिफरेंट लेवल है, मेजॉरिटी में कोई चीज़ है। फिर अगर हम चले जाएंगे ओशन लेवल पर, ओशन में फिर डिफरेंट है, मेजॉरिटी में वो है। फिर जब हम अर्थ क्रस्ट में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, तो मौजूदा टाइम में कौन सी चीज़ कितनी हालत में पाई जा रही है, हम उसके बारे में बात करें। हम बात कर रहे हैं कि जमीन के ऊपर कोई चीज़ कितने परसेंटेज में है, समंदर के अंदर कोई चीज कितने एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कितने परसेंटेज में है, एटमॉस्फेयर में कोई चीज कितने परसेंटेज में है। आज की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ मेजॉरिटी में है 47%। जमीन के ऊपर क्योंकि जानदारों को ऑक्सीजन सबसे ज्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन ही नेचुरली ज्यादा पाई गई है। उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन है, वो 28% में पाई जाती है। समंदर की बात कर लेते हैं, समंदर के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंटली ऑक्सीजन है, यानी कि जितने भी आबी जानदार हैं सबको ऑक्सीजन चाहिए, वहां पर भी 86% ऑक्सीजन ही है। फिर दूसरा, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट ज्यादा पाया जाने वाला है वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है, 11% है। तो उसके बाद हमारे पास एटमॉस्फेरिक लेवल की बात करते हैं, वहां अबंडेंटली पाई जाने वाली चीज नाइट्रोजन है 78%। सेकंड मेजर एलिमेंट वहां पर भी आपके पास ऑक्सीजन ही है। तो जो उनकी स्टेट है, किस हालत में पाए जाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भी एलिमेंट फिजिकली तौर पर ज़ाहिरी हालत में सिर्फ सॉलिड में पाया जाता है। सॉलिड में हमारे पास जैसे सोडियम है, जिंक है, गोल्ड है, आयरन एटसेट्रा, बहुत सी चीजें हैं, मेजॉरिटी इनकी है, सबसे ज्यादा सॉलिड ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी चीज आ जाती है वो गैसेस स्टेट में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये सारे गैसेस। और बहुत कम, वेरी वेरी फ्यू कोर्स उसमें पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में, जैसे हमारे पास जस्ट एलिमेंट के अंदर, वैसे कंपाउंड में चले जाते हैं, या फिर इसमें ये जैसे वाटर हो जाता है, ये हो गया मॉलिक्यूलर लेवल पर, कंपाउंड लेवल पर, ये सारे पाए जाते हैं। लिक्विड में हमारे सामने पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन एलिमेंटल लेवल तक जो बात करते हैं कि एलिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा सॉलिड है और रेयरली लिक्विड लेवल पाया जाता है। दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट।